And we'll start the session. Let's welcome sir. थैंक यू लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों के पास सबके पास पेपर पेंसिल आ चुका है। हम बहुत कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, बट आप मेरे इंस्ट्रक्शंस के बिना कुछ भी कॉपी करना शुरू मत कीजिएगा। ओके, सो प्लीज़ लिसन एंड फोकस टुवर्ड्स द बोर्ड, जहाँ पर बहुत सारा कुछ कार्टून जा रहे हैं, नए तरीके, सम मैजिकल ट्रिक्स जो आपको कोई भी कार्टूनिस्ट कभी भी नहीं बता। So I'm sure you're all excited for this workshop. Louder, much louder. Okay, we'll begin with a two questions, very simple questions. आप चाहें तो अंग्रेजी में जवाब दीजिए या हिंदी में दीजिएगा। मुझे सिर्फ अपने शब्दों में बहुत ही सिंपल तरीके से मुझे बताइए कि कार्टून क्या है, कार्टून हम किसे कहते हैं। कार्टून क्या है, हम कार्टून किसे कहते हैं। अपने दोस्तों का नाम मत बताइएगा। यस, एनीवन प्लीज रेज योर हैंड्स। यस, आप बताइए। स्टोरी नहीं, मुझे आप इस तरह बताइएगा कि जैसे मैंने जिंदगी में कभी कार्टून देखा ही नहीं है, मुझे पता नहीं है क्या चीज है, मुझे लगता है कोई चॉकलेट है, टॉफी है, आई डोंट नो व्हाट। Sir, funny character. Who said that? Okay, you're a little close. Yes? Sir, funny characters. It is a form of entertainment, but cheez kya hai? It is animated. Again, I'm missing that very basic word. No, it is definitely imaginary, but still I'm missing the very basic word. Hello. It has got characters, no doubt about it. No, you're all missing. I'll give you a clue. You're all holding a paper and a pencil with you, but you're missing a very important word. It is a drawing. सबसे important महत्वपूर्ण शब्द जो आपको अपने जवाब में यूज करना है कि it is a drawing, but यहाँ पर थोड़ा सा difference है. It is a funny or amusing drawing which makes you laugh. That's the most important part. Or entertains you is called what? Cartoons. In two words, you can say it as visual jokes. And if you want a technical answer to this, it is a line drawing which is exaggerated to give a comic effect. That is called a cartoon. Okay. Now, another very interesting question. देखें आप इसको जवाब कितने आसानी से दे पाते हैं। थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। कार्टून जो शब्द है वो तो अंग्रेजी शब्द हुआ, हिंदी में कार्टून को क्या कहते हैं? चलचित्र, मूवीज है। क्लू चाहिए? इस शब्द का आखिरी वर्ड चित्र है, चित्र से पहले कुछ लिखा होगा, चित्र से पहले। गेस कीजिए, आई एम श्योर नोबडी नोज। व्यंग्य चित्र, एकदम सही सवाल और सही जवाब। प्लीज गिव योरसेल्फ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस बॉय आउट हियर। दो वेज हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, दो वेज हैं। वन इज व्यंग्यात्मक चित्र या व्यंग्य चित्र, नहीं है तो आप सिंपल तरीके से इसे हास्य चित्र भी कह सकते हैं। ओके, नाउ कार्टून्स बनाने के लिए कैरेक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। विदाउट कैरेक्टर्स देयर इज नो स्टोरी टेलिंग, देयर इज नो जोक, there is nothing funny, because all those characters that you love in your cartoons is because of those funny characters that do stupid things or some funny thing. Okay, now to draw funny characters, first you should know how to draw a character's face. We will start with that very basic thing. Please focus your attention towards the board. Before that, let me introduce myself. My name is Ajit Narayan. I'm from that's my profession. I'm also the author of 7 books on cartoon making, which you see on the stage out there. I'll introduce those titles to you a little later. And I have been in this profession for the last 20 years. And I've traveled across the country giving workshops for children. And these books are also for you. So if you're interested, I think the stall number is 100 something. Scholastic, you will find these books.
I'm forgetting the number. Stop. Okay, I'll introduce those titles to you at the end of the workshop. So, are we ready to start? Okay, now first what we're going to learn is how to draw a cartoon character's face. आप मुझे पहले बताइए कि आपके चेहरे का कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप है जो फिट बैठता है, ओवल और सर्कल. दो शेप्स ही हैं, बट हम कार्टून्स में बहुत सारे उटपटांग शेप्स भी देखते हैं. ओके, बट वी विल स्टार्ट विद अ वेरी क्लासिक सिंपल कार्टून शेप ऑफ अ हेड. फॉर अ कार्टून इज a circle. I hope this is it visible very clearly? Okay, I'll make another one. Okay, now how many eyes do you have? Nose, eyebrows, mouth, ears, hair, one, many. Okay, now to place all those features onto this cartoon character, which is obviously representing a human form, but in a little exaggerated way. What we're going to do is before placing them, I'm going to draw a vertical line and a horizontal line. Please do not start drawing it. I want you to listen carefully, learn the technique, and then when I ask you to copy, I'll give you a chance for that. Then you can copy. You're going to see some magic out here. Now, to place all the features that you just told me, which is there on my face too, okay? The point where the two lines are intersecting, are meeting at the center, is where your nose is. I'm making a pani puri nose or a golgappa nose. Across the nose, you have the eyes, which I depict with a very simple 2 dots for eyes, sitting on this horizontal line or sleeping line. Above the eyes, you said you have eyebrows. I also have eyebrows, which could be of any shape and size. I'm just drawing it in open space right above the eyes. Under the nose, what do you have? Mouth. With a simple upturned curve, I create that. And across the nose, you have ears. With a simple alphabet C, you draw those ears. What is left? Hair. Let me give it a Maggie noodle hairstyle. And the face is now created. Now, can any one of you tell me, अगर मैं ड्राइंग में इतना बेहतरीन हूँ, 20 साल से मैं कार्टून्स बना रहा हूँ, तो मैंने ये 2 लाइन इतनी सिंपल पिक्चर बनाने के लिए क्यों यूज किया है? नॉट प्रोपोर्शन, नो, नो परफेक्शन, नॉट सिमेट्री, नो. It's a simple thing. It is to correctly position the features at the right places. Wait. Okay, now, that is simply to do that, but there is a magic involved. Once you create a cartoon character, you need to repeat those characters, not just always a flat face. He will be looking in all directions like you do when you're talking to your friend. Upar, niche, daएं, baएं. Now, if I ask you to draw the same very cartoon figure, looking in different directions, now you have a problem, but possibly after I show this magic, you will be able to do it very easily with any shape of face or with any kind of character that you create. Okay, here we go. Right now, this face is looking straight ahead. I want this face to look at all of you sitting on the floor. So, this is what I do. अब इस चेहरे को मैं नीचे की ओर घुमाते हुए दिखा रहा हूँ with a very simple trick. I draw the same vertical line, but I change the position of the sleeping line to the bottom half. And I repeat the same features because it is the same boy, and now this boy is looking at all of you and smiling. Now, I'm sure you have learned the very simple magic trick. अगर मैं चाहूँ कि ये चेहरा ऊपर की तरफ देखे, आसमान की तरफ देखे, तो मैं क्या करूँ? कौन सी लाइन? Sleeping line goes up. Very correct. But यहाँ पर थोड़ा सा common sense use कीजिएगा, थोड़ा सा difference आएगा. हमने जो नाक पहले 2 तस्वीरों में नीचे बनाई थी, अब इस बार हम तस्वीर इसकी जो नाक है ऊपर की तरफ बनाएंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ देख रहा है इस तरह.
Okay? Now, if I want this boy to look at me, मुझे देखे, तो मैं क्या करूं? If I want this character to look towards me, ये देखना चाहता है कि इसको बना कौन रहा है, मेरी तरफ देखना चाहता है, तो मैं क्या करूं? कौन सी लाइन कहाँ जाएगी? Vertical line कहाँ जाएगी? Towards my left. Okay, that's your left. Okay, and what happens to the sleeping line? Where? Same मतलब कहाँ? At the center. Excellent, excellent. You have learned the trick fast. This is what you said, and you are absolutely right. Simple? अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों जो लाइन का जो ट्रिक है ये बड़ा बचकाना लग रहा है, बट ये आप मानिएगा ये बहुत ही प्रोफेशनल ट्रिक है जो कार्टूनिस्ट जो कार्टून फिल्म्स के लिए बनाते हैं. एनिमेटर्स यूज दिस टेक्निक टू क्रिएट दीज कैरेक्टर्स लुकिंग परफेक्टली इन दैट एंगल. ओके, नाउ गर्ल्स सिटिंग आउट हियर, अगर उनको लगता है कि मैगी नूडल बॉय क्यों, गर्ल क्यों नहीं होना चाहिए, तो आप सिर्फ एक छोटा सा सिंपल चेंज करिएगा और इसका जेंडर चेंज हो जाता है. विद 2 चोटी इट बिकम्स अ गर्ल. Okay, now if you want to complete this picture, then only it becomes a complete cartoon character. To complete this picture, this is what you do. Extend this line, add 4 more lines to this, and your first original cartoon character is ready. The picture on the board looks funny because इतना बड़ा चेहरा और इतनी पतली डंडी जैसे बॉडी पे जो बैलेंस कैसे होता है देख के ही आपको हंसी आ रही होगी. Okay, so that's your first original cartoon which you can create on your own. Right now, I want you to copy this as quickly as possible. Please do not use scales for drawing those 2 lines. They are supposed to be done freehand. Okay? Please copy them as quickly as possible. Draw a rough circle. Please don't use anything, no instruments. Just draw a rough circle and copy what you see. बोर्ड पर जो ड्रॉ किए गए हैं तस्वीरों को जल्दी से कॉपी करें, चारों फेस, नहीं तो आप भूल जाएंगे जब तक आप घर पहुंचेंगे. इन पिक्चरों में थोड़ा और डिटेलिंग करा जा सकता है अगर आप चाहें तो, बट कार्टूनिंग में इतनी जरूरत होती नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जो चेहरा ऊपर की तरफ देख रहा है, इसका जो नाक के 2 गड्ढे भी नजर आना चाहिए थे जो मैंने बनाए नहीं, उसको क्या कहते हैं? Nostrils. Okay, so if you want to detail your picture, you can. For example, this picture जहाँ पर वो नीचे की तरफ झुका हुआ देख रहा है, तो उसके जो बाल वो मैंने सिर्फ उसके बाहर के शेप में ही बनाया है, जबकि उसको अंदर भी बनाना चाहिए क्योंकि जब आप झुकते हैं तो आपका हेयर काफी कुछ नजर आता है आगे की तरफ. So all those small details you can work out later on, and if you want to understand the principle behind the drawing, जब आप वापस घर जाएं तो अपने चेहरे को इसी रूप में देखें तो आप शायद इसकी जो ड्राइंग की अंडरस्टैंडिंग है और भी बेहतर हो जाएगी. Copied? Now we move on to another very interesting segment which is very crucial about the construction of cartoon characters. You're all familiar with stick figure. Are you all familiar with that stick figure? Which is the most simplest way to create a cartoon character's body. Now that also is a very important segment to learn. Can I erase them? Or are you still copying? Make it very quick, please. Now, in cartoons, the characters are absolutely essential for their existence, because without that, or without characters, there is going to be no joke, no story, no fun part when you're looking at cartoons. So next what we're going to take is how to create
characters' bodies and how simply you can do that. Can I erase them? All right, now what you're familiar with, you've already seen this. Now I'm going to simplify this further. Please look towards the board. The first what we're going to learn is the simple stick figure. This is how it looks. I want you to just copy them. This is the front view of the stick figure, which you're not very familiar. Everyone makes a mistake of drawing this as a stick figure, which I'm sure you must have thought this is how it should be. Now, this is the front view of a stick figure. As you see me, you can see the shoulder. Okay, that's the shoulder out there. But this is the side where you can't see the shoulder. So this is the side profile, and this is the front profile of a stick figure. Please copy this. Now, if you want to add muscles to this stick figure, which has absolutely no muscles, we can make a change with a very simple technique. You draw the circle, you choose either a circle or a square. You can choose either of them. And then add balloons for muscles in this way. You get the picture? This is how your arm looks. This is the elbow part, and this is the palm. Here comes the knee, which has the small circle, and the feet, again, represented by circle. Rest is all ovals for the thigh muscle, the calf muscle. The same goes for the arms out here. Now, if you want to draw, now this looks like a normal one. If you want to draw a fat person, this is how it will be. Everything will be fat for him. That will be a fat person. Please keep copying. This is just for your reference. Next time when you create characters, you can definitely be relying on these simple techniques of drawing a fat person. This is a normal standard looking cartoon character. These are simple ways of trying to add muscles to your cartoon character. Now, if you want to draw a superhero, all you have to do is add an inverted pizza or a triangle to give that athletic kind of a look. You get that feel? That's the feel of a superhero for a cartoon character. And for a female character, very simple. It is just two inverted triangles. These are simple body constructions which we cartoonists rely on to build the actual characters. This is how we begin sketching.
Copied? Are we done? Can I rub this side first so that I can add more pictures? Now, comic strip cartoonists prefer to draw single shape cartoon characters. They have 4 basic shapes on which they base their cartoon characters. I'm just showing you some of the simple ones. This is one very common with a square body. This is for very thin characters. This is the kind of construction which the cartoonist draws. Then there is another construction which is a trapezium. Body attached to a square and then legs. This is usually given for, although I have not drawn it a little wider, it's usually given for superhero kind of body construction. This is another way of comic artist doing this. The most popular one among the comic artists is this one. Just the body full of circles. And the most interesting part, the more wider you keep the legs, the more funnier the cartoon character appears. It is not drawn exactly how we humans stand. They are split a little wider so that they look very funny. And the most famous or popular shape that every professional cartoonist use, which is more flexible, more adaptable, is the pear-shaped body, which the comic artist very effectively use. Pear-shaped body. It is a cartoonist's favorite for very plump characters or wise characters. And we also do a little reverse pattern on this. That is, we reverse the pear shape like this also. Sorry. That is when we want to show a superhero with the same pear-shaped body. So we reverse the pear shape. So these are the 4 basic construction of bodies in a very simple term used effectively by animators who draw for cartoon films. Now we're going to take up a very interesting interactive exercise. What we're going to do with this simple knowledge that you've just gained, let me see how good your sense of observation is, which is one of the most important ingredients to be a good cartoonist. I want you to use this simple stick figure cartoon, which is this one. I want you to use this simple stick figure cartoon and make it look running like you do in your daily life. आप जिस प्रकार रोज दौड़ते हैं, इस स्टिक फिगर को दौड़ते हुए दिखाइए अपने पेज पर. सिर्फ एक पिक्चर. आपको सिर्फ सोचना है कि आप जब दौड़ते हैं तो आपका हाथ पैर किस प्रकार होगा, तो ड्राइंग बहुत आसान हो जाएगी. बट याद रखिएगा
सब कुछ आप सिंगल स्टिक फिगर में ही बना रहे हैं, दैट इज सिंगल लाइंस में। तो अगर आपको लाइंस मोड़ना है, तोड़ना है, तो इट हैज टू बी ओनली लाइंस, नॉट कर्व्स। दौड़ते हुए दिखाना है। नहीं, और हो गया। किसी ने बना लिया? शो योर पेपर्स प्लीज, आई जस्ट हैव अ क्विक लुक। नो, नो, perfect. He's making a pose, but he's not running. He's walking, not running. Anyone else? Please raise your pages. I come so far. That's good. That's very good. Very good. Excellent. बहुत बढ़िया. Excellent. That's also good one. No, he's just making a pose. He's not running. Okay, that's very good. Center girl, excellently done. Okay. I need to jump. Excellent. This is excellent. Very good. Very good. Boys at the back, boys and girls, please raise your hands. Or papers, please. Running, I said, running. Okay. You have not folded the legs. Your pose is excellent. Okay. बहुत बेहतरीन बनाया है। बहुत लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइंग की है, बट छोटे मोटे मिस्टेक किए हैं कुछ लोगों ने। That's okay, that's okay. This is excellent, excellent. Okay, very good. Good. Excellent. Oh, he's making a pose, he's not running. थोड़ा सा गिरते हुए दिखा दिया, वरना पोज सही है एकदम। बहुत बढ़िया बनाया। Okay, this is how it should have been. The running pose should have been like this. When a person runs, this is the shape that you should have taken. The leg will also fold up. So this is how it should have been. Okay, most of you have done it right, but this is a very simple exercise which you should practice on a daily basis. आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखिए और उनको सिंपली अपने स्टिक फिगर में कॉपी करने की कोशिश कीजिए। जितना आप करेंगे, आपकी उतनी बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज आपके कार्टून कैरेक्टर में नज़र आएगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आपने किसी भी कार्टून या कॉमिक बुक में कभी भी किसी कार्टूनिस्ट को ये लिखते हुए नहीं देखा होगा कि कार्टून कैरेक्टर दौड़ रहा है, जंप कर रहा है। ऐसा लिखा नहीं होता। आप देखते हैं तस्वीरों को और आप तुरंत पहचान जाते हैं कि वो कर क्या रहा है। अब ये जो है, ये तो बहुत रियलिस्टिक है। इसी चीज़ को आप बार बार सीखने के बाद ही हम एज ए कार्टूनिस्ट उसको हम एग्जैजरेट करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ कार्टून कैरेक्टर्स को हम इस प्रकार बनाते हैं जो थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, बट ये कार्टून में बड़ा मज़ेदार लगता है। अब इतना कोई झुक के कोई दौड़ नहीं सकता, गिर जाएगा, चांस ही नहीं है। बट वो एग्जैजरेशन है जो हम कार्टूनिस्ट करते हैं, क्योंकि हम ये जो रियलिस्टिक इमेज है इसको हमने अच्छी तरह जान लिया है और कैसे दौड़ता है एक इंसान हमने पहचान लिया है। तो ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद ही आप एग्जैजरेट कर सकते हैं इस तरह कार्टून। अब आपने और एक तस्वीर देखी होगी सेम दौड़ते हुए का, इन अ टर्बो स्पीड, जिसमें टांगे नज़र नहीं आती, इतनी स्पीड में दौड़ रहा है। ये सारी जो बातें हैं ये एग्जैजरेशन है। ये कार्टूनिस्ट तब कर पाते हैं जब वो बहुत ही श्योर होते हैं कि एक्चुअल ह्यूमन फॉर्म कैसे अलग अलग बॉडी एक्शन पोज में लगता है। तो आप आज से आप यही शुरू कीजिए कि जब भी आपके पास फ्री वक्त हो, आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखिए वो क्या कर रहा है और उसको सिंपल स्टिक फिगर में कॉपी करना शुरू कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी ड्राइंग इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि कल आप किसी को भी अपना कार्टून दिखाएंगे तो पहचान जाएंगे कि कार्टून में एक्शन क्या हो रहा है, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके,
Now we move on to the last segment, that is the expressions. कार्टून में आपने अजीबो-गरीब चेहरे देखे जरूर होंगे जो आपको जरूर हंसाए होंगे. मैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें बनाने जा रहा हूँ और आप मुझे बताएंगे कि ये एक्सप्रेशंस क्या हैं. ठीक है, तैयार हैं? तो पहले लेट्स गिव अ चांस टू द गर्ल्स. लेट्स सी हाउ स्मार्ट दे आर. आर वी रेडी? थोड़ी मुश्किल होगी. मैं 2 चेहरे बनाने जा रहा हूँ. दोनों चेहरे एक जैसे लगेंगे बट दोनों अलग हैं. दोनों में अलग अलग एक्सप्रेशन है. और इस एक्सरसाइज के दौरान मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान से देखें कि मैंने सिर्फ आईब्रोज, भवें, आईज, आंखें और सिर्फ माउथ यूज़ किया है. ओके ना मैंने नाक यूज़ करूँगा, ना मैं कान यूज़ करूँगा, ना बाल. बट इसका मतलब ये नहीं है कि कार्टून में इनकी ज़रूरत नहीं है. बहुत ज़रूरत है. बट सीखने के लिए पहले आपको जानना ज़रूरी ये है कि आपके चेहरे पर जितने भी एक्सप्रेशंस आते हैं वो आईब्रोज, आईज और माउथ के साथ ही आते हैं. प्लीज़ लुक टुवर्ड्स दीज ड्राइंग्स एंड टेल मी व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन. Okay, girls, let's start with you. Raise your hands if you know what is the expression on phase 1 and phase 2. दोनों में से कोई एक भी जानते हो तो कोई बात नहीं. Angry is not the right answer. Mischievous, which one? First one, mischievous. Okay, granted to you. वो कुछ तो शैतानी करने जा रहा है या उसके पास कोई दिमाग में ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा प्लान है, किसी को कुछ नुकसान तो कर ही देगा. Excellent answer. Please give her a clap for that answer. Very good. Very good. What's happened to the second phase? Frustrated? Nahi. Jealous also. Okay, to a certain extent. Not just angry. Not annoyed. What is it? Trivious. Grievous, no. Have a look at the picture again. The answer lies there. Jealous can be taken. Jealous can be taken. It seems he is much more anger. What do you call that? बहुत ज़्यादा गुस्सा. Furious. Okay, that's the answer to this. So he's furious. And this fellow is definitely having a devilish plan. Okay? This is for the boys. Okay? Yes. You have to answer by saying phase 1 or phase 2 so that I have been very clear. Which one? Both have sleepy eyes, but they are not sleeping. Which one? Phase 1, phase 2? Phase 2 what? No. No. Which one? Phase 1, phase 2? Phase 1 what? Phase 1 tired, exhausted, or he is sick? Excellent answer. Please give me a hand clap for that answer. Very good. Okay, so this is, he is tired or exhausted. What's happened to the second one? Lazy तो नहीं दिख रहा. Dizzy भी नहीं है. No. Anyone else? Simple. He's bored. He's bored. Okay, here comes the next one.
Okay, this one. Girls, this is for you. Face one. Dizzy, chakkar aa rahe hain usko. Excellent answer. Please give her a clap for that answer. Very good. Second one. Lazy. Crazy. No. 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 No, not mad. No. What happens when you're caught guilty? That's the face. When you're caught guilty or something is stuck in your throat. Well, kuch kha liya. Okay. Here we go with the next one. First one. First one shocking. Yes, she's shocked. What's happened to the second one? He's realized something. Okay, he's amazed, wonderstruck, or probably, as your friend says, he realized something, probably he's forgotten his homework. That's the kind of expression. Okay? Now, the interesting part is when you add body parts to these pictures, you should always keep it in mind that your character's body language changes with the expression. जैसा चेहरा होगा वैसी आपकी बॉडी का जो लैंग्वेज होगी या बॉडी का जो आकार होगा वो उसी प्रकार बनाया जाएगा. For example, somebody who's tired, this is how you should be drawing it. Okay, what happens is when somebody is bored, कौन सी body language बनाऊं? Maybe with a hand on the chin. Okay, I can make it even more funny. Okay, what happens when somebody is shocked? Shocked में क्या करेंगे? ऐसे? ऐसे, okay. That could be better. So this is how your friends are telling me. That's how it is. What happens to the other one? Who is amazed? One hand on the mouth. That's very good. Now rest, I don't have space, so you now try and understand this simple trick. This is what you do when you draw a simple expressive face. The body language should match the cartoon character's face. Then only the cartoon character will look very, very funny. Okay? Now, if you want to draw many more of these on your own, the simple trick is when you go back home, stand in front of a mirror and look at your own face. I'm not saying you're all cartoons, but that's the best way to learn. Look at your own face. अपने चेहरे को ध्यान से देखिएगा शीशे में और जो आपके आईब्रोज, आईज, माउथ के सहारे आप जितना भी एक्सप्रेशन बनाएंगे शायद कार्टूनिफाई नहीं होगा अभी, बट आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, बट आपको वो चेहरे का अलग अलग एक्सप्रेशन आप बना पाएंगे. Okay, please copy this onto your page as quickly as possible. Are we done, ma'am? I'll just point out. Hello. Another funny thing that you can do